Hey lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डायूरेटिक एजेंट डिस्कस किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डायूरेटिक एजेंट इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट. Now in our today's video lecture we are going to understand the next important part of our potassium sparing diuretic agent. In our previous video discussion, we mainly focused on the mechanism of action of our potassium sparing diuretic agent. वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो potassium sparing diuretic agent होते हैं, we can classify them into two main categories. The very first one is known as aldosterone receptor antagonist, which is also known as aldosterone receptor blocker, and the second one is known as epithelial sodium channel blocker. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कौन से ऐसे ड्रग्स है जो ये कैटेगरीज में आते हैं. नाउ इन अवर टुडेस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आवर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड दैट इज what is the therapeutic application of our potassium sparing diuretic agent. The next important thing that we are going to discuss is about the adverse effect of our potassium sparing diuretics, and in today's video lecture we are going to discuss a very important question, and that question is जब हमने कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा, लूप डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ा, थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट के बारे में पढ़ा, वहां पे वी एड्रेस्ड अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट एंड दैट साइड इफेक्ट इज नोन एज हाइपोकलेमिया. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि व्हाई बाय गिविंग सच क्लास ऑफ डायूरेटिक एजेंट पोटेशियम का लेवल हमारे बॉडी में कम क्यों होता है. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दिस. बट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, press that bell icon, like this video and share it with your friends. So let's start with our today's revision of our potassium sparing diuretic agent. So as we all know कि ये जो potassium sparing diuretic agent होते हैं, we can classify them into two main categories. The very first one is known as aldosterone receptor antagonist and the second one is epithelial sodium channel blocker. So what happens when we are giving the patient aldosterone receptor antagonist? So as you can see on your screen, this blue color is representing our aldosterone molecule, and ये जो aldosterone है, it is going to act on our aldosterone receptor. So as you can see here, there is a complex getting formed, and this particular complex is known as mineralocorticoid receptor aldosterone complex. Now जब ये aldosterone ये complex के साथ जुड़ जाता है, there is a formation of very important proteins, and those proteins are known as aldosterone induced proteins. Now what happens in the presence of this aldosterone induced protein is the sodium channels which are expressed on our luminal side of our principal cells, इसका जो concentration है वो बढ़ जाएगा, और we can say the expression of sodium channel बढ़ जाएगा. So अगर expression ज्यादा होगा, so more and more sodium can get reabsorbed. But our aim is to avoid the reabsorption of the sodium. So when we are giving the patient aldosterone receptor blocker, or we can say aldosterone receptor antagonist, so this aldosterone is not able to act on its receptor, so AIP is not getting produced, and as AIP is not getting formed, so जो epithelial or we can say जो सोडियम चैनल है हमारे लुमिनल साइड में, वो भी एक्सप्रेशन कम हो जाएंगे. And if the expression of sodium channels on our luminal side of our principal cell अगर वो कम हो गए, so relatively जो reabsorption of sodium होता था वो नहीं होगा. So where this sodium will go, ultimately ये जो sodium है वो excrete out हो जाएंगे, and we know कि sodium is always followed with water. So sodium के साथ साथ water भी eliminate out हो जाएगा, and this particular effect is known as diuresis effect. And जो भी ड्रग्स डायूरेसिस इफेक्ट शो करते हैं, दे आर नोन एज डायूरेटिक एजेंट. ये तो हो गई पहली स्ट्रेटेजी. नाउ सेकंड स्ट्रेटेजी इज कि जो एपिथेलियल सोडियम चैनल है, डायरेक्टली हम वो एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे.
So by blocking the epithelial sodium channel, reabsorption of sodium is inhibited and ultimately ये जो सोडियम है वो यूरिन में वाटर के साथ एलिमिनेट आउट हो जाएगा एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू सी द डायूरेसिस इफेक्ट एंड ऐसे जो ड्रग्स होते हैं दे आर नोन एज डायूरेटिक एजेंट. वी ऑल्सो सॉ कि कौन से ऐसे ड्रग्स आते हैं इन दिस पर्टिकुलर टू कैटेगरीज. सो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में we need to remember two important drugs. The very first one is known as spironolactone and the second one is known as eplerenone. Now second category में we have epithelial sodium channel blocker and epithelial sodium channel blocker में we have example like amiloride and triamentarin. So this was all about the brief introduction of the mechanism of action and कौन से drugs इस categories में आते हैं. Now moving on to our further segment कि ये जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट होते हैं ये हम कौन से क्लिनिकल कंडीशन में दे सकते हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी नाउ द थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ अवर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट. So the very first important therapeutic use of our potassium sparing diuretic agent is in the condition that is known as Cons syndrome. Now Cons syndrome में प्रॉब्लम क्या होती है? There is more presence of aldosterone और we can say जो aldosterone है वो ज्यादा सीक्रेट आउट होता है. So अगर aldosterone हमने रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया so aldosterone जिस रिसेप्टर पे काम कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा. So जो भी मैनिफेस्टेशन थे ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ aldosterone which is seen in the Cons syndrome वो कम हो जाएंगे. So very first important therapeutic use of our potassium sparing diuretic agent is in the condition that is known as Cons syndrome. The second important therapeutic application is edema in cirrhosis. Now cirrhosis के condition में क्या होता है? There is compensatory increase in the levels of aldosterone production. उसके वजह से क्या होता है? We know कि जब ये aldosterone receptor पे काम करता है that is reabsorption of sodium and अगर हमारे बॉडी में सोडियम reabsorption हो रहा है we always know कि this sodium is always followed with water. So जब हमारे बॉडी में अगर सोडियम का रिटेंशन ज्यादा होगा so ultimately we can safely say कि सोडियम के साथ साथ वाटर का भी लेवल हमारे बॉडी में बढ़ेगा and उसके वजह से there can be a condition of edema. So in the condition of cirrhosis में क्या होता है? There is compensatory increase in the sodium or we can say the aldosterone level. उसकी वजह से जो reabsorption of sodium है in our human body वो बढ़ जाएगा and the patient can suffer from edema. So in this particular condition we can also give our potassium sparing diuretic agent और we can say हम ये patient में aldosterone receptor antagonist दे सकते हैं. What it will do? It will promote the loss of sodium. एंड अगर लॉस ऑफ सोडियम अगर ज्यादा प्रमोट होगा सो कैन आई से कि जो बॉडी में सोडियम का रिटेंशन है वो कम हो जाएगा एंड अगर बॉडी में रिटेंशन ऑफ सोडियम कम है सो सोडियम जो पानी के साथ होता है सो वाटर लेवल विल ऑल्सो गेट रिड्यूस एंड द पर्सन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एडिमा एंड उसको रिलीफ हो जाएगा. So the second important therapeutic use of our potassium sparing diuretic agent is edema that is mainly seen in the condition of cirrhosis. Now moving on to our third important therapeutic application of our potassium sparing diuretic agent is they are used in combination with other diuretics to prevent the risk of hypokalemia. हमें ये पता है कि जितने भी हमारे बाकी के क्लास ऑफ डायूरेटिक एजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, वी हैव लूप डायूरेटिक्स, वी हैव थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट, वहां पे एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज हाइपोकलेमिया. बट व्हेन वी आर गिविंग द पेशेंट पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट एज वी नो कि ये जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट होते हैं इट इज नॉट प्रोमोटिंग द लॉस ऑफ पोटेशियम. सो जो बाकी के ड्रग्स है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स या फिर थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट कैन बी कंबाइंड विथ अवर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट, जिससे क्या होगा जो रिलेटिव लॉस हो रहा था पोटेशियम का बाय गिविंग अदर डायूरेटिक एजेंट
which was causing the hypokalemic condition, वो हम कम कर सकते हैं, because when we are giving potassium sparing diuretic agent, it is retaining the potassium and it is not promoting the loss of potassium. So it is very useful for the combination with other diuretic agent in order to prevent the risk of hypokalemia. Now the fourth important thing, that is, it can be used in the condition of congestive heart failure. So in the left ventricular hypertrophy, or we can say cardiac remodeling, that is mainly seen due to aldosterone. So अगर हमें cardiac remodeling नहीं होने देनी है in the patient with congestive heart failure, we can consider giving the patient aldosterone receptor antagonist. So it will be beneficial for the patient who is suffering from congestive heart failure. And finally, we can use our potassium sparing diuretic agent in a condition that is known as resistant hypertension due to primary hyperaldosteronism, which is mainly seen in our Conza syndrome. So there are 5 important therapeutic applications. Number 1, Conza syndrome. Second one is edema in cirrhosis. It can be used in the combination with other diuretics in order to prevent the risk of hypokalemia. Fourth one is it can be used in the condition of congestive heart failure. And fifth one, it can be used in the condition of resistant hypertension, which is mainly seen in the condition of Conza syndrome, because वहाँ पे जो primary, that is hyperaldosteronism, that is the aldosterone का जो level है वो बढ़ जाएगा. So in that condition also we can give potassium sparing diuretic agent. Now moving on to our adverse effect of our potassium sparing diuretic agent is, the very first one is hyperkalemia is the major adverse effect of our aldosterone receptor antagonist. So as we all know, अभी हमने पढ़ा कि ये जो potassium sparing diuretic agent होते हैं, they are not promoting the loss of potassium, rather it is promoting the retention of potassium. So ये जो potassium है, अगर body में ज़्यादा retain होगा by giving such kind of potassium sparing diuretic agent, so it can give rise to a condition that is known as hyperkalemia. So hyperkalemia is an important risk factor of our potassium sparing diuretic agent. Now ये जो spironolactone होता है, that has a risk of producing gynecomastia, and other important side effects may include nausea, vomiting, diarrhea, peptic ulcers, drowsiness, mental confusion, and menstrual disturbances can also be seen by giving potassium sparing diuretic agent. Now moving on to a very important question, and that is why by giving different classes of our diuretic agent, वहाँ पे हमने एक important side effect देखा था, and that important side effect was of hypokalemia. So here we are going to discuss why that hypokalemia is occurring. So as you can see on your screen, here is the pictorial representation of our collecting tubule. Now collecting tubule में हमने पिछले अभी वीडियो में देखा था कि there are 3 important channels. The very first one is a sodium channel, and understand कि यहाँ पे जो सोडियम है वो luminal side से सेल के अंदर जा रहा है. So this particular arrow is towards this cell. That means जो भी सोडियम है that is getting reabsorbed. So this was our sodium channel. The second important channel is our potassium channel, and potassium cell से luminal side में आ रहा है. So this particular arrow is representing outward direction. Third important thing, that is our hydrogen channel, and hydrogen कहाँ से cell से बाहर जा रहा है, and here also the arrow is outward. Now let's assume कि इस collecting tubule में 100 sodium आ रहे हैं. Now out of this 100 sodium, let's assume कि 40 sodium ions are getting reabsorbed via with the help of our sodium channel. So अगर 100 में से 40 सोडियम अगर रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो कितने सोडियम यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे? द आंसर इज वेरी सिंपल. 60 सोडियम आयंस यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे. कैसे? 100 सोडियम अगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आते हैं, उसमें से 40 सोडियम अगर रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, सो 100 - 40 इज इक्वल टू 60.
सो ये जो 60 सोडियम है दैट इज गेटिंग एलिमिनेट आउट फ्रॉम अवर ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ अगर ये 40 मॉलिक्यूल्स या फिर 40 आयंस ऑफ सोडियम अगर रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, सो कैन आई से कि यहाँ पे देयर इज अ डिवॉइड ऑफ -40 और वी कैन से जो पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे 40 कम है. नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे ये 40 पॉजिटिव चार्जेस फिर से ये लुमिनल साइड में फेंक पाए ताकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट हो, मेंटेन हो. सो वी हैव 20 पोटेशियम एंड 20 हाइड्रोजन coming inside the lumen in order to compend or in order to maintain the electron gradient. So 40 positive charges अंदर आए and in order to compensate 20 potassium बाहर आए and 20 hydrogen बाहर आए. So 20 plus 20 is equal to 40. So 40 अंदर गए और 40 बाहर आए. So the equation is balanced and जो electron gradient है वो maintain हो रहा है. Now पोटेशियम यूरिन में कितना एक्सक्रीट आउट होगा? द आंसर इज 20 पोटेशियम यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा एंड 20 हाइड्रोजन यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा. दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मल सिनेरियो. नाउ लेट्स सपोज हम पेशेंट को डायूरेटिक एजेंट देते हैं एंड हमें यह पता है कि डायूरेटिक एजेंट जब भी हम देते हैं, व्हाट इज आवर मेन इंपॉर्टेंट पर्पस? Our main purpose is to eliminate out the sodium from the human body. So जब भी हम पेशेंट को डायूरेटिक एजेंट देते हैं, so collecting tubule पे can I say there will be more presence of sodium. So यहाँ पे when we are giving the patient diuretic agent, let's suppose 200 sodiums are coming into our collecting tubule. Now ये 200 में से let's assume कि 80 सोडियम रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं. नाउ अगर 200 में से 80 सोडियम अगर रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं तो कितना सोडियम यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा? द आंसर इज वेरी सिंपल. 200 minus 80 is equal to 120. So 120 sodium ions is getting eliminated out from our human body in the urine. Now again we need to maintain the electron gradient. So अगर 80 पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं तो हमारे पास फिर से कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए दैट इज थ्रोइंग 80 पॉजिटिव चार्जेस इनटू द लुमेन सो दैट जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो वो मेंटेन रहे. सो वंस अगेन वी हैव पोटेशियम एंड हाइड्रोजन. सो 40 पोटेशियम आयंस इज गेटिंग एलिमिनेट आउट एंड 40 H plus ions are getting into the lumen. So 40 plus 40 is equal to 80. So 80 positive charges अंदर आए and 80 positive charges in order to maintain our electron gradient फिर से lumen में आए. So the balancing of equation or we can say जो electron gradient है in the lumen has been balanced. Now ये जो potassium है that is 40 potassium is getting lost into the urine and 40 hydrogen will be lost into the urine after giving the diuretic agent in this particular example. Now can I say कि अगर जितना ज्यादा सोडियम रीएब्सॉर्ब होगा in order to maintain the electron gradient उतना ही ज्यादा पोटेशियम एंड उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन एक्सक्रीट आउट होगा. That means पहले हमने क्या किया था? पहले यहाँ पे 40 सोडियम आयंस रीएब्सॉर्ब हुए थे. So 40 अगर सोडियम रीएब्सॉर्ब हुए हैं in order to compensate 20 पोटेशियम बाहर आए थे and 20 H plus ions बाहर आए थे. बट व्हेन वी आर गिविंग द डायूरेटिक एजेंट सो यहाँ पे जो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम है वो बढ़ रहा है एंड अगर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम अगर ज्यादा है सो मोर एंड मोर पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आर गेटिंग एलिमिनेटेड आउट इनटू द यूरिन. सो जितना ज्यादा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम आयंस जितने ज्यादा रीएब्सॉर्ब होंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा पोटेशियम एंड उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन जितना कि मेंटेन करने में लगता है उतना एलिमिनेट आउट होंगे. सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी आर गिविंग द डायूरेटिक एजेंट, जैसे हमने देखा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स या फिर थायाजाइड डायूरेटिक एजेंट, वहां पे जितना ज्यादा सोडियम अगर रीएब्सॉर्ब हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे करेंगे इन ऑर्डर टू कंपेंसेट उतना ही ज्यादा पोटेशियम
एंड उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन लॉस होगा इनटू अवर यूरिन। एंड अगर ज्यादा पोटेशियम अगर लॉस होता है, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज हाइपोकलेमिया। इसीलिए जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एजेंट, all of them have a very important risk factor, or we can say the side effect that is known as hypokalemia. Now आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि let's suppose a patient is suffering from hypertension. Now hypertension में whenever we are giving the patient diuretic agent, so अगर ज्यादा सोडियम अगर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, हमें तो हाइपरटेंशन में सोडियम का एलिमिनेशन प्रमोट करना है, ताकि क्या होगा कि जो भी हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, एंड जो भी हमारा हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो अगर बाय गिविंग डायूरेटिक एजेंट अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, then in that particular case why we are giving the patient diuretic agent? Let's understand this with the help of the example. Let's suppose एक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, एंड वो हाइपरटेंशन के पेशेंट को हमने लूप डायूरेटिक एजेंट दिया है। नाउ लूप डायूरेटिक इज वर्किंग ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड वी नो फ्रॉम आवर बेसिक वीडियो लेक्चर कि जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20 to 25% of reabsorption of sodium. So whenever we are giving the patient loop diuretics, 20 to 25% of reabsorption of sodium हम रोक रहे हैं। So let's suppose in this particular case एक hypertension patient है, and उसमें हमने loop diuretic agent दिया हुआ है। So let's assume कि 25% of reabsorption of sodium हमने रोक दिया है। Now ये जो 25% of sodium हमने रोक दिया है reabsorb होने से, that will go into distal convoluted tubule. Now in the distal convoluted tubule further 8 to 10% of sodium is getting reabsorbed. So अगर 25% minus 10% मान के चलते हैं, let's suppose 10% is getting reabsorbed from our distal convoluted tubule. So कितना हुआ? 25% minus 10% is equal to 15%. Now ये जो 15% है, that will move towards our collecting tubule. And collecting tubule में मान लेते हैं कि 5% of sodium is once again getting reabsorbed. So 15% minus 10% is equal to 10%. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10% जो सोडियम है that is getting eliminated out. Now ये जो 10% है that is beneficial for the patient who is suffering from hypertension. So always remember in pharmacology कि things are not absolute. Things are in a relativity. जैसे ये पेशेंट में अगर हमने कोई भी डायूरेटिक एजेंट नहीं दिया होता, यानी कि लूप डायूरेटिक एजेंट नहीं दिया होता, सो जितना 10% ऑफ सोडियम एलिमिनेट आउट हो रहा है उतना भी नहीं होता। सो एटलीस्ट बाय गिविंग लूप डायूरेटिक एजेंट 10% तो एलिमिनेट आउट हो रहा है, एंड दैट 10% इज वेरी बेनिफिशियल फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। सो थिंग्स आर ऑलवेज इन रिलेटिव कंडीशन। Now one important question is which of the diuretic agent class is promoting more loss of our potassium, and the answer is carbonic anhydrase inhibitor is promoting the more loss of our potassium. Why? Because whenever we are giving the patient carbonic anhydrase inhibitor, वहाँ पे क्या होता है? It is blocking the activity of this particular enzyme. So उसकी वजह से क्या होगा? जो H प्लस आयंस है वो जनरेट नहीं होंगे, एंड अगर H प्लस आयंस अगर जनरेट नहीं होंगे, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट more and more potassium has to go outside the cell in order to maintain the electron gradient. So always remember in the equinatriuretic dosing जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, that is having the maximum risk of hypokalemia. So that was a very important concept. So that's it for today's video lecture. I hope आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है। In the next video lecture, we are going to deal with our next important class of our diuretic agent, and that is our osmotic diuretic agent. So see you until the next video. See ya. Bye bye. Have a good day.